ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको हम लोग करते हैं परफॉर्म। तो प्रैक्टिकल कहता है टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ इन ओपन ऑफिस राइटर। इस पैराग्राफ को, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड this paragraph we have to type in OpenOffice writer. Then after we will save the document with the name about India, and next task is find the word civilization in the document and replace it with the civilization and check spelling. So these tasks we have to do. Okay, this is our practical number 3 that we have to do. Okay, so we will start. So first we open the OpenOffice writer here. OpenOffice, we will go here, OpenOffice, then we will type here text document. This is OpenOffice writer. Okay, so here this is open now. This is the window that is displaying when we open OpenOffice writer here. So we are typing the text. So text is India is one of the oldest civilization in the world. Okay, and with a kaleidoscopic variety and rich culture heritage. Okay, full stop. It has achieved all round socio-economic progress since independence. Okay, as the 7th largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and the seas. Mountains and the seas. Okay, seas that give the country a distinct geographical entity. Okay, this distinct geographical entity. Okay, so this text we have typed now. So our first task is done. Okay, now we are moving to the second task. Second task is what it is saying, save the document with the name about India. Okay, so now we are saving this document as about India. So save button we have pressed, file menu and save. Where we want to save, first we locate the location where we want to save. Suppose we want to save this file in desktop, then we will write here, and now name is about India. Okay, so that is done. Second task is done now, and the third task is find the word civilization and replace with the word civilization. Okay,
तो हमें किसी वर्ड को इसमें से फाइंड करना है और फिर उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस हमको ये मिलता है, या फाइंड रिप्लेस। तो हम यहाँ पे एक वर्ड सर्च करते हैं, सबसे पहले सपोज इंडिया सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे इंडिया भी हमें दिखेगा, ठीक है। ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, इंडिया फाइंड। नाउ यू कैन सी दैट इंडिया इज फाउंड नाउ। Yes, find, this is now India is fine. Okay, now what we have, we want to search civilization. Okay, then we will click here find. Okay, now we can replace this word by any other word. Suppose we want to type here civilization. Okay, double L we have typed here and replace now. Then you can see that our word has been replaced with the new word. Okay, so that is called find and replace. Okay, so take this picture again. Okay, this is my second task that we can take here, and this is my third task. Okay, so where we are making our file that we can do. Okay, so first two tasks we also had to do. What was the first task? Step 1, open type the open office writer on search bar on taskbar, ठीक है। दूसरा step 2, open office writer window appears. Step 3, type the required text. Third step 4, to save it, click on file menu and select save option. Okay, step 5, save as dialog box appears. Type the name about India in text box. Step 6, locate the place where you want to save the file. Step 7. Step 7, what we do? Step 7 for find and replace. Click on कौन सा बटन पे हमने डिस्प्ले किया था? फाइंड एंड रिप्लेस बटन। ओके,
तो this button we can take the print of this button also. Click on this button. Okay, so here we can also type this. Click on this button. Okay, step 8, type the text civilization find and replace dialog box appears. ठीक है, find and replace dialog box appears now. Then step 9, what we have to do, that search for. ठीक है, type the text that you want to search in search for text box and also type the text for which you want to replace that text in replace with text box. ओके, तो रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे, और जिसको सर्च करना है उसको आपको यहाँ पे लिखना है. एंड फाइनली प्रेस द रिप्लेस बटन. ओके, एंड फाइनली प्रेस द रिप्लेस बटन. स्टेप 10, and finally press the replace button. Okay, तो whatever we are doing here, okay, जो भी हमने यहाँ पे किया प्रैक्टिकली उसी के आपको स्टेप्स भी लिखते जाना है. ठीक है, that is the practical. Okay, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या था उसके अंदर, एक और क्या था, चेक द स्पेलिंग ऑफ द टाइप कंटेंट प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट. So we can also check the spelling mistakes, that you can see spelling mistakes showing with the red lines, red wavy line is coming, that means it has the spelling mistakes. Okay, so that we can do. Now we can select this option, and in this spelling and grammar, or we can go to the spelling grammar, and here we can check the spelling mistakes. Civilization is the correct word that we can change. Okay, now socio-economic is the correct word that we can also change. Okay, here this we can also take the printout of this screen also, that we also add here. Step next, checking of spelling. ठीक है, यहाँ पे स्टेप हमने क्या किया, स्टेप 1, प्रेस स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन. ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, और प्रेस F7. ठीक है, ठीक है, तो हमने F7 प्रेस किया तो ये विंडो आ गई. इस विंडो के बारे में हमको लिखना है थोड़ा सा. आगे लिखते हैं, इसी के बारे में हमें लिखना है.
the text with red wavy lines has spelling mistakes. ओके, बस। तो रेड वेवी लाइंस में हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखती हैं, जो हमने बता दिया, ठीक है। वी कैन चेंज द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अवर नीड। सो दिस इज अवर प्रैक्टिकल नंबर 3 दैट वी हैव डन। ओके, इसको सेव कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल नंबर 4, ठीक है। प्रैक्टिकल 4 में क्या करना है उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिकल 4 में क्या करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप